So now we are moving on to the part on errors, right? How we can analyze error in any measurement. So basically, remember ki what is the meaning of an error? Basically, remember that error is an uncertainty associated with any measurement, right? Error is an uncertainty associated with measurement. तो जब भी हम लोग कोई भी measurement करते हैं तो there is some sort of uncertainty associated with it and that is known as an error. Remember कि we say that कोई भी measurement perfectly accurate नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ error, कुछ ना कुछ uncertainties उसमें होती है. Now when we talk about the errors, there are different sources of error or different types of error. Errors can be, you can say, systematic. Systematic errors include the instrumental error, right? मतलब अगर तुम्हारा instrument का calibration में problem है, अगर imperfect design है, अगर procedure is not proper, right? You are measuring something and you don't know the proper procedure, so you'll get some error. Okay. If you have some personal error by bias, मतलब due to your habit, अगर तुम्हें कोई suppose तुम reading ले रहे हो and you have a habit of tilting your neck and standing, तो उससे भी error आएगा. इस टाइप के जो errors होते हैं which arise because of known causes and which have a systematic order of sign and size. मतलब अगर मैंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, अगर मुझे सारे वैल्यूज पॉजिटिव मिल, सारे एरर्स पॉजिटिव मिल रहे हैं, सारे एरर्स नेगेटिव मिल रहे हैं, एक टाइप से मिल रहे हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं, देन दे आर कॉल्ड सिस्टमैटिक. The second one is called random error, right? Random errors are those which occur randomly in terms of sign and size, and इनका कोई specific या targeted origin हम लोग को पता कर पाना मुश्किल है. Can be due to various causes. Like suppose तुम कोई experiment कर रहे हो based on electricity and suddenly you have a fluctuation in the line power. जिससे तुम्हारे readings में error आ सकता है. ठीक है? You may have error due to say lack of concentration. ठीक है? So these all are coming under random errors, right? But random errors basically are self-compensating. They are statistical in nature. Statistical in nature means probabilistic, right? By matter of chance, sometimes it is positive, sometimes negative, and are self-compensating. तो सेल्फ कंपेंसेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एरर इस एक्सपेरिमेंट को ट्रायल्स को बहुत बार रिपीट किया और फिर उसका एवरेज वैल्यू निकाला, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जितना पॉजिटिव एरर होगा लगभग उतना ही नेगेटिव होगा, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव रेशियो कैंसिल कर देगा. तो द मोर वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, द मोर वी आर क्लोजर टू एक्यूरेसी वी कैन से, और द लेसर विल बी द एरर इन द मेजरमेंट. ठीक है? तो इसका मतलब रिमेंबर दैट एक्सपेक्टेड रैंडम एरर जो होता है, इन दिस केस वी कैन से दैट एक्सपेक्टेड एरर, जो एक्सपेक्टेड एरर है, मीन एरर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स. अगर तुम नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा एरर्स घटता जाएगा या एक्सपेक्टेड एरर घटता जाएगा. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर. And you know, least count means what? Least count is the minimum reading which can be measured by an instrument. So when we have errors associated with least count, that is known as a least count error. So these are the types of errors, or you can say classification of errors based on their origin. अब क्या है कि जब हम लोग कोई measurement करेंगे तो उसमें error का representation कैसे हो? ठीक है? So basically, when we come to representation of errors, there is some technique. What is the technique? Let's try to understand that. Let's come to representation of errors. So suppose I am measuring a quantity called A, right? Suppose A is a physical quantity which is to be measured. Let's say A is a physical quantity. Sure. And suppose I am writing serial number of observation and the measured values.
the measured values. So suppose first time when I measured, I got the measured value as A1. Second time I got it as A2, and this way, nth time I got the value as AN. तो एज आई सेड कि जब हम लोग एरर्स मेजर करते हैं तो अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स रहेंगे एक्सपेक्टेड एरर उतना कम हो. तो दैट इज वाई हम लोग फिजिक्स में या एक्सपेरिमेंट करते टाइम कभी भी एक क्वांटिटी को एक बार मेजर नहीं करते, वी मेजर दैट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, एंड उन सब का जो एवरेज होता है दैट इज टेकन टू बी द बेस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्लोज टू ट्रू. वी कैन से दैट द बेस्ट expected value of the quantity A, or which can also be taken as the true value, will be but the mean value of A, which is the summation of all these is A1 plus A2 plus dot 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 till AN divided by N. Now let us take the errors. Now let us take the absolute errors. So basically error क्या होता है? Error is nothing but the difference between the true value and the measured value. ठीक है? तो जब हम लोग measured value में से true value को माइनस करेंगे तो हमें error मिलेगा. Sometimes it will be positive, sometimes it will be negative. But हम लोग absolute लेंगे. Absolute मतलब उसका mod लेंगे, modulus लेंगे. So the first one will be modulus of A1 minus A mean. The second will be A2 minus A mean. And this way, when we keep on measuring, the last one will be AN minus A mean modulus. So when we take the average of all these moduluses, then we get the mean absolute error. And we get the mean absolute error. Or we can call it delta A, sometimes we call it delta A mean also. ये कितना आएगा? Mod A1 minus A mean से लेकर के mod AN minus A mean का average. Is the point clear? Yes or no? Yes, sir. Now the point is what? We can say that the range of variation, range of, we can say, possible values of A, range of the possible values of the quantity A, ठीक है, जो हम लोगों का allowed range of variation है वो कितना होगा? It will be from say A M minus delta A mean, right, to AM plus delta AM. Okay, this will be the range of variation of the quantity. अब अगर तुमने मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया या मीन वैल्यू ऑफ द रिजल्ट से डिवाइड कर दिया, then the ratio of that, the mean absolute error divided by mean value, this is known as fractional or relative error. This is known as fractional or relative error. Okay. Remember, fractional or relative error is a better measure of accuracy of your measurement. Suppose मैंने दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से एक लेंथ को मेजर किया. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट में मेरा मेजर्ड वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर, एरर आया 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर. और सेकंड में मैंने 5 सेंटीमीटर मेजर किया, उसमें एरर आया 0.1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर. तो दोनों में एरर बराबर है. But in the first case, out of 10, error was 0.1. So the ratio was 0.1 by 10. In the second case, error was 0.1 out of 5. Obviously, first measurement was better. Because in the more measured part, the amount of error was less. So इसीलिए जब हम fractional or relative error निकालते हैं, it gives us a better idea of the accuracy of the measurement method. एंड अगर तुमने इसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग विद 100%, सो दैट विल गिव अस परसेंटेज, that will give us percentage, right? So this is how we can represent errors in any measurement. Clear हुआ यहाँ तक?
Yes, sir. नाउ हम लोग को जो याद रखना है दैट इज अबाउट रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. द रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. तो बेसिकली याद रखना कि इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स फॉलोज द रूल ऑफ डेरिवेटिव्स. हमें डेरिवेटिव्स के साथ चलना. For example, if I have z equals to a plus or a minus b, तो you know कि dz अगर हम लोग निकालें dz by dA, that will be equal to what? It will be equal to simply 1, right? Plus minus dB by dA. So that means we will get dz equals to dA plus minus dB. राइट. बट जब हम एरर का बात करेंगे तो रिमेंबर कि द टोटल एरर इज द और द एरर इन द रिजल्ट इज टेकन टू बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर आउट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. क्यों? क्योंकि देखो हमेशा हम लोगों को मैक्सिमम एरर रिपोर्ट करना अच्छा होता है. तो इफ आई नो द मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम परमिसिबल एरर तो मैं उसके हिसाब से करेक्शंस अप्लाई कर सकता हूं टू गिव अस द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट. समझ में आया? तो व्हेन वी टेक द एरर यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी या प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी या माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. तो इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सा होगा? Obviously when both are positive, so that is why we will take the rule as what the sum of the total error in Z, yeah, the maximum absolute error in Z will be equal to what? Sum of absolute error in A and the absolute error in B. So whenever the quantities are added or subtracted, errors हमेशा add ही करना है. Is that clear? Understood? Yes, sir. Secondly, if I have the combination like suppose Z equals to A multiplied by B. So now you know कि as per derivatives we know कि अगर मैंने dz by dA निकाला suppose, so this will be equal to B plus A multiplied by dB by dA. Yes or no? As per the rule of derivatives. So obviously we can say that dz, right, that will be by z. If I divide it, if I convert into relative error part, so this will be equal to B by AB multiplied by dA, okay, plus A by AB multiplied by dB. So automatically the result will be what? dA by A plus dB by B. Right? So automatically we can say that the rule of combination is what? The rule of combination is very simple. To delta Z equals to delta A by A by Z plus delta B upon B. Understood? So for multiplication, what is the rule? The maximum relative error in Z will be the sum of relative errors in A and B. Right? यहाँ तक clear हुआ? Yes, sir. Okay. The same rule applies in the case of division also. The same rule applies to the case of division also. Even if you divide the rules in rule remains same. वो करके भी देख सकते हो, ठीक है? You can just do the derivative and check it. So if you have Z equals to A by B, here also the error will be the formula to find out error will be same. That is delta Z by Z will be equal to delta A by A plus delta B by. माइनस नहीं करेंगे क्योंकि as I said we have to take the maximum permissible error. इसके अलावा if you have any exponent kind of relationship, if you have any exponent kind of relationship, suppose if you have Z equals to say A to the power small a, B to the power small b, by suppose C to the power x, E to the power y, then the formula is what? Delta Z by Z, relative error in Z will be A into relative error in A plus small b into relative error in B plus x into relative error in C plus y into relative error in T. Okay?
तो अगर वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है रिलेशनशिप बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस सॉरी इनटू और डिवाइड, तो क्या करना है हम लोगों को, सिंपल हम लोगों को इनटू डिवाइड वाला फॉर्मूला ही लगाना है। ओनली ईच रिलेटिव एरर विल हैव इट्स वेटेड कोफिशिएंट, और वो कोफिशिएंट कितना होगा जितना उसका पावर, राइट। सो दीज आर द सिंपल रूल्स। इसके अलावा अगर हमें कोई और टाइप का फॉर्मूला दिखता है जहां पे ये रूल्स वैलिड नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर द मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स। जनरली डेरिवेटिव मेथड हमेशा काम करेगा, और अगर ये स्पेशल जो हम लोगों ने फॉर्म्स पढ़ा अगर इसमें है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वी हैव टू गो एज पर द रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes. अब यहाँ पे देखो, जो चीज हम लोग को याद ध्यान में रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एरर इन z निकाल रहे हैं तो देखो कि ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड विद इट्स पावर, राइट। इसका मतलब जिसका पावर सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा एरर में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, सो वी कैन से द टर्म having the maximum power, the term having the maximum power contributes the most, contributes to the most to the relative error in the result, to the relative or percentage error in the result. So must be measured with maximum accuracy or minimum error, right? With maximum accuracy or minimum error for getting the best possible result. ठीक है, तो अगर हमें रिजल्ट में एरर को मिनिमाइज करना है तो जो टर्म या जो क्वांटिटी का पावर सबसे ज्यादा है उसको सबसे ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट। क्लियर है यहाँ तक? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So let's come to a problem to understand कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे प्रैक्टिकली। तो फॉर दैट the question that I am taking up, question is in the density measurement of a cube, in the density measurement of the mass and edge length are measured as mass and edge length measured as क्या first is 10.00 plus minus 0.10 kg। यानी इसमें ट्रू वैल्यू कौन सा है 10.00 एंड एरर कौन सा वाला पार्ट है 0.10, ठीक है। एंड ये मास वाला हो गया, एंड एज लेंथ का क्या है, एज लेंथ का वी हैव एज 0.10 plus 0.01, 0.10 plus minus 0.01 मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। So question is the relative error in the measurement of density is in the measurement of density is, first option है 0.31। रिमेंबर कि रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, एंड अदर एरर्स कैन विल बी सेम एज द गिवन पॉइंट। The second one is 0.01
option is 0.10. The fourth option is 0.07. So this is a question from your JEE Mains 2019. ठीक है तो कैसे सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी वी नो कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम एंड अ क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब तो ये किस फॉर्म में ये डिवीजन फॉर्म में तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एरर्स so we know कि del rho by rho will be equal to what L m by m plus 3 del L by तो del m कितना है देखो मास मेरर कितना है 0.1 kg and what is the value of the mass real mass or true mass 10.00 kg कट जाएगा plus 3 multiplied by delta L is 0.01 divided by this is 0.10 ठीक है तो just add the two errors you get the result कितना आ जाएगा इसमें obviously 0.10 by 10.00 कितना आ रहा है इसमें this is coming 0.01 right this one is coming 0. How much find it out आएगा 0.3 right yes or no hello can you hear me Yes, sir. so the answer will be 0.3 clear clear yahan tak yes or no Yes, sir. Shine is it clear the next one let us try it out quickly because we have less time bio wala bhi class hai shayad Sampurna your bio class also no Yes, sir. so just last one more question the maximum errors अपने question क्या है the maximum errors in measurement of resistance current and time resistance current and time for which current flows electrical circuit R and electrical circuit R 1%, 2%, and 3% respectively. 1%, 2%, and 3% respectively. Okay? The maximum percentage error in the detection of dissipated heat. The maximum percentage error in detection of dissipated heat will be first option was 2. Second option is 4. Option 3 is 6. 8.
Okay, question from JEE Mains 22. ठीक है, what will the result? सबसे पहले मैं ये पता करना है कि हीट के साथ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम कैसे रिलेटेड। तो कैन यू रिकॉल हाउ हीट, करंट एंड टाइम आर रिलेटेड? लास्ट टाइम में था ये फॉर्मूला। यस शायन, कैन यू रिकॉल क्या था फॉर्मूला? शायन यू आर नॉट ऑडिबल। ठीक है, तो वेरी सिंपल, वी नो दैट heat produced was given by I square multiplied by R multiplied by E. Yes or no? Yes, sir. Okay. So there is Joule's law. So obviously we can say कि delta H by H will be twice of delta I by I plus delta R by R plus delta E. Sir, it will be 8%. Hmm? It will be 8%. So this will be 2 delta I by I. Current is measured with 2% error, so 2 by 100. Delta R by R is 1%, so 1 by 100. And delta T by T is given as 3%, 3 by 100. So 3 plus 4, 7, and 1 is 8 by 100. Obviously, we can say that the percentage error in each, percentage error in each, 8 by 100 means it will be 8%. तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, we can directly use the formula. Apart from that, अगर कुछ different है, तो we can take help of the derivative kind of relationships. Is that clear? Yes or no? Yes, sir. And so far? So that's all for today then. In the next class, we'll see 1 or 2 more problems. Thank you so much. Thank you, sir.